अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी। बहुत सारे मेथड्स में बनती है ये। दिस इज़ वन ऑफ देम। इंग्रेडिएंट्स सारे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक पैन गरम करके उसमें एक लेडल ऑयल, एक करी स्पून के उतना ऑयल डाल दीजिए। वंस द ऑयल इज़ हॉट, हाफ स्पून मस्टर्ड सीड्स, राई डाल दीजिए। When it splutters, add 1 teaspoon whole zeera. अब थोड़े करी पत्ते ऐड कर लीजिए। Saute for around 30 seconds. Now add the dry red chillies. Break them into half, round about 4. अब कटे हुए टमाटर ऐड कर लीजिए। I have added salt to it, 1 teaspoon of salt. Mix well. I had also mixed the half teaspoon ginger garlic paste to the tomato. Add 1 teaspoon each of chilli powder, quarter teaspoon haldi powder, 1 teaspoon zeera powder और 1 teaspoon धनिया पाउडर। अब अच्छे से मिक्स करिए ऑन मीडियम टू लो फ्लेम। इसमें बिल्कुल पानी ना ऐड करें। नाउ कवर विथ अ लिड and cook on low flame for around 30 to 40 minutes. बीच बीच में stir करते रहिए. It has to become really soft and mushy. When the tomatoes are reduced to almost half the consistency, it is almost done. If you want it very dry, you'll just have to keep it on flame for some more time. Otherwise, it is done. It goes very well with chapatis and even hot rice. Keep cleaning the sides as you cook, warna that masala will get burnt and then there will be a burnt smell in the masala, in the chutney. Tomato ki chutney is now ready to serve. ये इसका final look. तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसमें, but the chutney is worth it. It goes very well with as a side dish for chapatis, idlis and even dosa, akki roti as well. Do try it out. Thank you for watching.